जनरल परसेप्शन देखा है इंडियन सोसाइटी में यही होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, अब इसमें देखते हैं कि बीइंग अ मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी कैसे उसको जज ने ट्रीट किया। Greetings everyone. On behalf of Paathshala classes, I, Vaibhavi Batra, welcomes you all on our YouTube channel. Today is lecture 25th of our online Clat marathon series, and today we would be dealing with a very recent news, the divorce between the Indian cricket star Shikhar Dhawan and his wife Aesha Dhawan. So the case name is Shikhar Dhawan versus Aesha Dhawan. Why are we discussing this today? So इसको discuss करने का basic reason ये है कि generally हम अगर एक ओवरव्यू देखते हैं या हमने जनरल परसेप्शन देखा है इंडियन सोसाइटी में यही होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उन पर मेंटल क्रुएलिटी होती है या उन पर अत्याचार होता है, या मतलब दे आर नॉट द वन, मतलब बेसिकली 90% ऑफ द केसेस जनरली ऐसे ही होते हैं जिसमें वो विक्टिम होती हैं डिवोर्स केसेस में एंड देन दे फाइल। बट इस केस में the situation is opposite. Here the male member, that is the husband Shikhar Dhawan, is the victim in this marriage. He has been separated from his son for so many years and उसको divorce मिला है from his wife on the basis of mental cruelty. So you know there's a difference कि उस पे डोमेस्टिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ फीमेल, ओ वाइफ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता था तो उसने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया, बट यहाँ पे उल्टा है, हस्बैंड पे मेंटल क्रुएलिटी होती थी इसलिए उसने वाइफ से डिवोर्स ले लिया। हम सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विच डील्स विद द डिवोर्स कि किस किस सिचुएशंस में डिवोर्स मिल सकता है। उसमें से द वेरी फर्स्ट इज सेक्शन 13 clause 1(1)(a) is cruelty, and cruelty includes both either mental or physical. Okay, so there's nothing much in this, but it's a very important thing and a progressive decision given by the Delhi Family Court. ओके एंड थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली सिचुएशंस क्या थी, हम इसका पीछे का देख लेते हैं। तो हुआ ये था दैट शिखर धवन एंड उसकी वाइफ आयशा धवन, सो आयशा धवन की सेकेंड मैरिज थी एंड शी ऑलरेडी हैड 2 डॉटर्स फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज, जो प्लस शिखर धवन से शी हैड 1 सन जिसके लिए बेजरी केस हुआ था। तो हुआ क्या दैट शी सेड she lived in Australia and she said that after marriage I'll shift to India and I'll live with you, but that didn't happen because she had prior commitments with the first husband, ex-husband, उसकी daughters के थे एंड उनकी वजह से वो इंडिया शिफ्ट नहीं, वो इंडिया भी शिफ्ट नहीं हुई, उसने शिखर धवन को अपने सन से भी नहीं मिलने दिया इतने टाइम तक, कोविड भी आ गया एंड देन शी ऑल्सो यू नो यूज टू लाइक ये तो मेंटल टॉर्चर ही हो गया ना इफ अ फादर इज नॉट अलाउड टू मीट और टॉक टू हिज सन। फर्स्ट थिंग ये हुई, देन शिखर धवन ने 3 प्रॉपर्टीज ली थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें से 99% ओनर वो कह रही थी कि मुझे बनाओ, बट she was compelling him कि उसको ओनर बनाया जाए। देन जब वो इंडिया आई थी कुछ टाइम को रहने के लिए, उसने अपनी डॉटर्स के लिए 17,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी भिजवाया करती थी एंड शी शोड दैट कि दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, सो इवन ही वाज पेइंग फॉर द एजुकेशन of the daughters from the first marriage and then their expenses for the month. On top of it, she wanted to you know be the co-owner and the major owner in the properties which he bought in Australia, and he was not able to meet his son as well. So obviously he was being mentally harassed and he decided that he should go with it because इस सिचुएशंस में जो है, बिकॉज शी इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड ही लिव्स इन इंडिया, तो ऑब्वियसली विजिटेशन का इशू, राइट्स का, कस्टडी का भी मेजर इशू है, बिकॉज अभी सिर्फ फैमिली कोर्ट ने अनाउंस किया है कि उनका डिवोर्स हुआ है, शिखर धवन हैज बीन ग्रांटेड डिवोर्स, बट देयर वाज no declaration made on the custody arrangement. For that he will visit the
union ministry because it involves an international matter, so that accordingly we'll see. So हम इसमें देखते हैं कि being a male member of the society कैसे उसको जज ने ट्रीट किया. The family court in Delhi on Wednesday, that is 4th October 23, granted divorce to cricketer Shikhar Dhawan from his estranged wife Aesha Mukherjee, holding that the wife subjected him to mental cruelty. Mental cruelty के मैंने आपको बताए. Judge Harish Kumar accepted all the allegations made by Dhawan in his divorce petition. Divorce petitions में उसने जो allegations बताए थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं. Against his wife on the ground that the wife either did not contest the said allegations or failed to defend herself. उसने कुछ allegations तो contest ही नहीं किया और कुछ जो उसको लगा कि मैं defend कर सकूँ उसने defend भी नहीं किया. The judge held that the wife subjected Dhawan to mental agony by compelling him to live separately from his only son for years, while refusing to pass any order on permanent custody of couple's son. Permanent custody पे कोई order pass नहीं हुआ है. The court granted visitation rights. उसने सिर्फ visitation rights दिए हैं to meet his son for appropriate duration in India and Australia and also to chat with him over video call. On plus कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो उसकी हाफ ऑफ हिज कैलेंडर वेकेशंस वो अपनी शिखर धवन और उसकी फैमिली के साथ स्पेंड करेगा. The court further ordered Aesha to bring the child to India for visitation purposes, including overnight stay with Dhawan and his family members, at least for half the period of school vacations during the academic calendar. Since petitioner is a reputed international cricketer, subject to petitioner approaching to the Union Government of India, it is requested to take up the issue of visitation or custody because she lives in Australia and he is such a stardom of our country. So he has to visit the ministry for this of the minister's son with its counterpart in Australia to help him have regular visitation or chatting with his own son or his permanent custody, the court order. Because इसमें एक ये बात भी है कि जो धवन का son है उसकी custody, उसकी citizenship is Australian, so that's why he need this help. अब कोर्ट ने एक वो प्रेसिडेंट रखा. द कंसिडरिंग द एलिगेशंस ऑफ मेंटल क्रुएलिटी के बारे में कोर्ट ने रिमार्क दिया. रेफर टू कौन सा केस? वी भगत वर्सेस डी भगत. ये याद रखिएगा प्लीज. wherein the apex court said mental cruelty in section 13(1) clause 1a of Hindu Marriage Act can be broadly defined as the conduct which inflicts upon the other party such as mental pain and suffering. इस केस में वो अपने ओनली सन से अलग था, as it would make not possible for that party to live with the other. In other words, mental cruelty must be of such nature that the parties cannot reasonably be expected to live together. The situation must be such that the wronged party cannot reasonably be asked to put with such unintentional. If it is physical, it is a question of fact and degree. If it is mental, the inquiry must begin as to the nature of the cruel treatment and then as to the impact of such treatment on the mind of the spouse. So I hope this is clear and it's a very progressive decision because the thing which I liked in this, it's not a good thing, sorry to say, but the part where Shikhar Dhawan from his wife, because generally it's from a husband hota hai. So the Indian society is progressing. If any male member of the society is being suppressed in a relationship or in a marriage, then he should be vocal about it. Because if judiciary is with you, then you no one can beat you. Justice is with you. I hope you like today's video. Please, if you like us, then subscribe us so that you will be notified about the next video. Thank you.